we were recalling about different types of angles we have done earlier. So we were talking about angles on a straight line. So we all know that angle on a straight line adds up to 180 डिग्री. और अगर मैं इस एक एंगल को डिवाइड कर दूँ दो पार्ट्स में यूजिंग अ लाइन, so you guys can see something common over here as well. So we'll be learning, we already know about vertically opposite angles, we already know about parallel lines, we already know about transversal, but the new types of angles which we'll be learning about is we'll be doing alternative angles, and then we'll be doing corresponding angles, and we have already learned about vertically opposite angles, but in this diagram we will need to recognize those. So let's move on. So if you guys see this diagram, what angles can you recognize from here? You're given the values here. Take a minute, take a moment and recognize the types of angles given to you over here and state why do you think so. So I hope you guys have done this. If you see, these two angles are formed between two lines which have crossed one another. If you can see, this is one line and this is the other line. जब दो लाइंस ने आपस में क्रॉस किया तो हमारे पास ये दो एंगल्स, ये एक पेयर बना और ये दूसरा पेयर बना. हमने अभी ये बात की थी कि जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो हमारे पास वहाँ पे कौन से एंगल्स बनते हैं? हमारे पास वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. So if you guys can see, this angle and this angle is equal, and similarly this angle and this angle is equal, as these two are also vertically opposite angles. What if you see this part? What if I ignore this part and if I see at this, if I focus on this part? Let me make a different line here with different color so that I can just clarify here. Let's suppose I have one line, which is this line, and I have this other line. You can see here that these two lines are also crossing one another, and so as I said earlier, here we are getting different angles that are also vertically opposite angles. You can see that this angle and this angle are vertically opposite angles, and similarly this angle and this angle is vertically opposite angle as well. But the problem is, if you guys just go, or if you guys just merge these two things, you guys can see that this value and this value is the same, and similarly this value and this value is the same. If I see the other way, this value and this value is the same, and similarly this value and this value is the same. How is this possible? We understand that these two are same because this is vertically opposite angle, or these two are same because this is vertically opposite angle, but how are these two angles same? Why is this 62 and this 62? Similarly, if we see here, these two are vertically opposite angle. I understand that these two can be the same, and similarly I understand that these two can be the same, but why is this angle and this angle the same? Why is this angle and this angle the same? So you guys can see that there is some connection between it. Here is where it comes, where we will learn about what alternative angles are and what corresponding angles are. So let's begin. So here is another activity where you can just click on it and you can see the different types of angles or different parts over here. So if I click on transversal, we can see that this is basically the transversal. If I click on parallel lines, we can see that these two are the parallel lines. If we see about vertically opposite angles, we can see that these two angles are vertically opposite angle, these two angles are vertically opposite angle, similarly these two angles are vertically opposite, and these two are also vertically opposite angles. Let's look at it for a while. Similarly, now if I talk about what corresponding angles are, just look at it carefully.
over here are corresponding angles. Let's say if we just let me pause it a bit. Let's say over here A is right here, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं दोनों लाइंस के ऊपर टॉप पर हैं और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड पर है, सो वी से दैट दीज टू एंगल्स आर corresponding angles. Similarly, if I say, let's suppose, क्योंकि मुझे पता है कि ये और ये vertically opposite angles हैं, so let's suppose ये एंगल, if I say ये दोनों vertically opposite angles हैं, तो अब मुझे पता है इस एरिया में वो कौन सा एंगल होगा जो बिल्कुल D के बराबर होगा. Yes, you're right. वो एंगल यहाँ पर जो बिल्कुल वहाँ पे ही है जहाँ पर D है. अब अगर देखा जाए तो ये एक लाइन है और इसके नीचे वाले पार्ट में D है, वो भी ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे, तो हम भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट कर रहे हैं लाइन के नीचे वाले पार्ट पे, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू D की होगी वही वैल्यू यहाँ पे H की होगी. Let me change the color here again. So let's suppose अगर हम बात करें दूसरा पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, तो अगर हम बात करें इस एंगल C की, ये एंगल C है, अगर देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन के बिल्कुल नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें भी यहाँ पे वो एंगल चूज करना होगा जो बिल्कुल पैरेलल लाइन के नीचे हो और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड यू गाइस आर राइट, दैट इज एक्चुअली द G हियर. सो हियर C and G are equal. एक और बात यहाँ पे मैं ध्यान में रखनी होगी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि ये दो लाइंस कट करेंगे तो जो एंगल यहाँ पे G है वही एंगल यहाँ पे F है, बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये G के बराबर है, सो यहाँ पे ऊपर हमें कौन सा एंगल देखना है, वो कौन सा एंगल है जो बिल्कुल F के बराबर है. यस यू आर राइट, वो एंगल जो बिल्कुल सेम जगह पे है ऊपर जिस जगह पे F है. यहाँ पे F जो है लाइन के टॉप पर है और वो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लाइन के टॉप पे देखना होगा ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे. यू आर राइट दैट दिस F is equal to P. So I hope the corresponding angles are clear to everybody. Let's talk about alternative angles. अब तुम्हारे पास alternative angles की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन एक बात याद रखें, alternatives क्या होते हैं. You guys have seen this design maybe in your copies or something. Let me draw it for you. You guys might have seen this design as a drawing or as a manual design. You can see that I have colored the boxes alternatively. मतलब कि इस बात का कि मैंने एक बॉक्स कलर की फिर मैंने एक बॉक्स छोड़ा है. Then I colored the one box and I have left the other. Same thing is happening in the other levels or in other rows as well. So we call it that we are going to color alternatively. So what do I mean by alternate angles over here in this diagram? You guys can copy this diagram in your journal